Hey guys, this is Vineet Pandey. You must have been waiting for my cutoff. Yes, I was actually in Shillong. Many of you who are connected to me, they know that I was enjoying the trip of Northeast, and now I'm here with a cutoff. First of all the students who attempted for UGC NET English, the people who were in my offline batch, in online classes, video classes, Google Drive batches, do you know that this paper was comparatively easy? I prepared you for the worst. This is my strategy. I always prepare my student for the worst because I do not hope to have an easy paper. I don't want an easy paper. I want a tough paper. Why? Because you're going for the competitive exam, and the history of UGC NET English has many examples of toughest paper and quite easy paper. But my students were asking me, "Sir, as the paper was easy, what will be the cutoff?" And I forwarded them a voice note from Shillong. My message was that, friends, it's easy, but not for all. It's easy for you. A lot of people say UPSC exam is tough, it's impossible, but then there are people they qualify. In every result, you find out 500 people, 1000 people have qualified UPSC. Just like that. In every NET exam, people come and say it was tough, it was toughest, it was impossible, and then there are people who are NET JRF toppers. They crack exam. So, yes, it was easy, but for whom? The way we prepared in classes, me, my students, when we were working together, having 10-hour sessions, we were studying for 10 hours, starting from 10 in the morning, ending the class by the evening in the 10. These people, when they attempted this, they found it easy, but it wasn't easy for all. Because if you're not prepared, you can make mistakes in the basic line. There is nothing out of the text. But in my class, when I was teaching deconstruction, I told them, remember this. If they ask you a question, they'll ask you this. If you remember my lecture on P.V. Shelley, while I was teaching Ode to Westwind, I clearly mentioned this thing that they will ask Tarza Rhymer. I made my students write new critics and the group of critics from new criticism. But we also prepared Vanderbilt University. We prepared fugitives. We prepared Southern agrarians. Why? Because if they ask the toughest one, we will be answering this. So my cutoff is simply based on the idea that paper was moderate and tough. Moderate, easy for the students who are prepared the way I am prepared, the way I teach my student. I have my own experience of qualifying NET for 10 times. Sometimes students ask me why this man attempts exam again and again. I tell you why. For this only. Because when I tell my students that be prepared with the chronological order of D.H. Lawrence, they find it in the exam. When I tell my students that remember the quotation, that quotation can be asked from Othello, they are prepared in the exam. I have a responsibility to give the best result. That's why I have to be the best. Rest, I'm going to talk about one simple information. Offline batch. The date has been extended. So if you want to join the batch, you can join now. First date was 15th January, but students from Kashmir, students from Northeast, they are asking us to extend the date because it is snowfall and they are finding it tough to come to Delhi. So keeping the request of the students in the mind, the date has been extended. Now the next date is 27th January for offline batch. If you want to work hard, if you want to qualify, if you want to give a sure shot to your June 2025 attempt, I invite you to join offline batch. Now, before I go for cutoff, these are the toppers of last batches. Look at their percentiles: 99.996, 99.94, 99.72, 99.88. We are experts in giving results. If you really want to crack this, if you really want to become successful, if you really want to have government job, you just have to work hard with us. I'll be giving you the best guidance. Along with that, the woman who qualified NET after 23 years, this girl has been posted again. Boy from Kashmir, girl from Haryana, and a lot of other people, along with many YouTube teachers who are teaching you right now, were once my online students. Simply, if you work hard, you will qualify, you'll get JRF. Join online video classes if you cannot come to Delhi. अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, this is the January New Year, ये आपका commitment है, you want to qualify, join the online video classes, get offline batch, live classes, lectures, recorded lectures. Then you'll be getting all these details: flexible learning, direct interaction,
Why to choose me? First of all, let me tell you why to choose me. With a simple story. Teachers are everywhere. But what we are teaching in competitive field. Competition hai ye. Competitive teachings are different kind of teachings. We are not William Shakespeare. We are not, T.S. Eliot. We are not here to give philosophies. We have to make you qualify first. Once you qualify, you get your salary, you can buy the books, and you can become Shakespeare of your own. I, Vineet Pandey, have qualified NET 10 times. Most probably, I will be qualifying this one also. Why I qualify again and again? I am in general category. Why I qualify again and again? Because I know what they ask. I know the most important questions. I know the frequently asked topics. I know one should prepare those concepts, the writers, the books, latest theory, and I've taught in University of Delhi for 3 years. Delhi University में as assistant professor पढ़ा है. So the professors, teachers, my colleagues, they helped me to polish myself. I am 2 times JRF. How did I get that JRF when my paper one is not strong? Because giving my best to this field, exploring all the test papers, net papers, I check TGT papers also. I check PGT papers, I check CUET PG papers, I check DU, JNU, Jamia, entrance papers. I make sure that when I teach, my student is the best. Simple. Now I ask you a question. You want to climb Mount Everest. You want to climb Mount Everest? There are two guides. One has qualified that Mount Everest climb one time. There is another guide, me, who goes to Mount Everest in June, in December, in June, in December, multiple times. Mount Everest is a climb where you can risk your life, where you can die. The person who climbed Mount Everest 5 years back, and the person, me, who is climbing Mount Everest again and again as a guide, with whom you will feel safe. You want to save money? You'll go for cheap one, risking your life, or you want to go with the one who keeps on going to Mount Everest again and again, knows the area of snowfall, knows the area of landslide, knows the area of deep valleys, deep pits, or the one who is highly experienced who can save you. That's simple. Your UGC NET success with me, that man who is guiding you knows what to attempt, how to attempt, what to read. So this is me. This will help you. We recently conducted international seminars. These are my certificates. A lot of other certificates are there. To join the batch, offline batch, contact on these numbers. This is the QR code for Androids. For iOS, this is the QR code you can scan. These are the notes material. The notes material have been updated. According to the last pattern, 7th January, there were some random questions. These random questions have been updated in the notes. So if you want to have updated notes, you can contact. Then I will go for cutoff. You'll be getting complete information right there only. So these are the details. Scan the QR code, join the classes. Now let's save your time because this video has many informations to be shared. It was needed to inform a lot of students. So let's get back to the cutoff. So ready for the cutoff? Before I tell you cutoff, I must tell you this as a teacher. The cutoffs are just predictions. Wait for the final cutoff from the UGC. I personally, as an aspirant, as a teacher, do not believe in cutoff system. But this YouTube fish market wants us to talk. Why? Because students are texting me, sir, your cutoff. Your cutoff is always right, so your cutoff. So I'm telling you, I respect your request. I'm going to tell you the cutoff, expected cutoff. But as a teacher, I do not believe in these predictions. You have attempted, now let the result be announced. Because if I tell you the cutoff, it will give you 5 minutes happiness, 5 minutes depression. If I say my cutoff is high, you will feel depressed. If I say my cutoff is low, you will feel happy. But both happiness and both sadness are fraud things, fake. So, no doubt, you must be saying, sir is in business, sir is talking about batches. Yes, because batches I teach. How will you get to know that where I'm teaching? A lot of students ask me, sir, where is your coaching class? Where is your class? So it is my duty to inform you.
but I still have my soul saved and alive. So, repeating once again, I do not believe in these cutoff systems. I believe in hard work. Give your best shot. Let people think about cutoff. Now, keeping the request, respecting the request, let's talk about the cutoff. कम से कम आप ये बोलोगे कि टीचर में इतना दम तो है कि ये बोलता है कट ऑफ वट ऑफ फालतू चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, आपको कुछ समय की खुशी, कुछ समय का दुख, तो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको लगे कि कोई तो है जो थोड़ा बहुत सच बोलता है। और ये सच बोलने के लिए सिर्फ फेंकने वाली बाजी नहीं है। 10 बार नेट, 2 बार जेआरएफ हूं, तो पढ़ा है, पढ़ाई की है, किताबों को खूब पढ़ा है, आंखों के गड्ढे ऐसे ही नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, कट ऑफ वट ऑफ फालतू चीजें होती है। क्या होगा इससे अगर मैं ये बोलूंगा और आपको लगे ओ अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिजल्ट, लेट यूजीसी टेल। चलो लेट्स चेक। जनरल कैटेगरी जेआरएफ 63 to 65% होगा। क्यों? पेपर वॉज नॉट दैट मच इजी। पेपर इतना आसान नहीं था। मेरे स्टूडेंट्स न्यू क्रिटिक्स को पहचानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को डीएच लॉरेंस के सारे ऑर्डर्स याद हैं, मेरे स्टूडेंट्स को ओथेलो की कोटेशंस याद है। बट क्या ये सबके लिए कॉमन है? क्या ये सबके पास है? क्या सबको पता है टर्जा राइमा क्या है? तो पेपर आसान था, लेकिन ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड इन ऑफलाइन बैच, गूगल ड्राइव, या 150 बच्चे वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। आप बोलोगे सर आपके अलावा भी तो बच्चे प्रिपेयर हो सकते हैं। आई अटेम्प्ट एग्जाम अगेन एंड अगेन। मैं बार बार एग्जाम देता हूं। मैं हवाबाजी में नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं कि खुद का जेआरएफ नहीं हो रहा और अपने आप को बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया बोलूं, नहीं। जो पेपर दिया है, लगातार पेपर दे रहा हूं, उसके हिसाब से फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड लाइक मी, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, उनके लिए पेपर इजी था, लेकिन ओवरऑल मॉडरेट से टफ है। जनरल जेआरएफ 63% जाना चाहिए, 65 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का मैंने साथ में डाल दिया है, इकोनॉमिक व्हीकल सिलेक्शन, 60 to 62% के आपके पास जेआरएफ जाने के चांस है। आपका जो नेट है जो कि वैलिड रहेगा 60 to 63% के आसपास। नॉर्मली 60% ही जाएगा, 63 मैंने टू बी सेफ साइड, क्योंकि प्रेडिक्शंस देनी है तो समझदारी से देनी चाहिए। तो नॉर्मली आप 60% ही मानो, 63 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट तक करेंगे नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए 57 एंड 60% है। नेट विद पीएचडी जो कि वेस्ट है, ये टोटल वेस्ट है, ये आपका 55% to 60% होगा फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस 52% to 56%। अगर नेट आपका थर्ड कैटेगरी में आता है तो इतना याद रखना, वैसे किसी काम का नहीं है, बट ये एक मैसेज है दैट यू कैन क्वालिफाई। इट्स अ मैसेज दैट यू डिजर्व, यू हैव वर्कड हार्ड। तो ये मतलब है कि आप सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, एक अटेम्प्ट बहुत सीरियस देना। बट यस, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, दैट इज अ ट्रेडिशन। जून एग्जाम टफेस्ट होता है, दिसंबर आसान होता है। डू यू नो द रीजन? मुझे यूजीसी अथॉरिटीज ने ही बताया था कि जून को हम हाई लेवल टफ क्यों रखते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, बहुत सारी इंडियन स्टेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, they will appear in their third semester, fourth semester, final year exams of post graduation. In the month of March, in the month of April, in the month of May, a lot of students will be applying for UGC NET. 30 to 40,000 new students applying for UGC NET. New crowd all over India, 220 cities, average 5 colleges everywhere, 5 post-graduation colleges. A lot of students, they fill the form. So competition is high in the exam called June. In that case, June exam is tough. Why? So that experienced one can qualify and the freshers, they can get their learnings and target December. So mostly freshers June attempt में बहुत tough होता है, उनके लिए आसान नहीं होता है। June is always tough. Now, थर्ड कैटेगरी में आ रहा है तो मेहनत करो। ओबीसी का जेआरएफ 59% to 64 जाएगा। टेक्निकली आपका होना चाहिए यहां पे 62% के आसपास जेआरएफ हो जाएगा। अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख देना कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा। नेट आपका 55 to 58% है ओबीसी कैटेगरी, 52 to 55%, 55 के बीच में आपका नेट और पीएचडी रहेगा, जो कि अगेन किसी काम का नहीं है। हमेशा देखना एससी और एसटी कैटेगरी में इधर इट इज 1%, 2% और सेम। 90% केसेस में एससी एसटी की जो कैटेगरी है वो सेम जाती है, सेम परसेंटेज है। एक दो एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे 1% का 1.5% का फर्क पड़ा, तो फ्रेंकली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है।
मैंने अपनी हर कट ऑफ में हमेशा आपको एससी और एसटी का एक ही बताया है, क्योंकि 90% केसेस में दोनों को सेम कट ऑफ दे दी जाती है। अगर किसी को लगेगा नहीं सर ये अलग कैटेगरी है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जितने स्टूडेंट्स फॉर्म अपीयर करते हैं, देखो जनरल का कंपटीशन अलग लेवल पे टफ है, क्योंकि जो फॉर्म भरता है क्राउड, वो क्राउड भी गिनती में बहुत ज्यादा है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर एससी और एसटी कैटेगरी में 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो जनरल कैटेगरी में 15,000 16,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो काउंटिंग वाइज भी उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका जेआरएफ हाई जाता है। यहां पे बराबर रहेगा, नेट 40 to 46 दोनों के लिए है, 40 to 42, 40 to 42 दोनों के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई अग्रीमेंट नहीं, आपको लगता है कि कुछ बताना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखना। पीडब्ल्यूडी नॉर्मली मैं बताता नहीं हूं, उनके बारे में बात नहीं करता हूं, क्योंकि एक मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से है जो फिजिकली हैंडीकैप है, उसे हर हाल में एक क्वालिफिकेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने जीवन के साथ भी कुछ अच्छा कर सकता है और मेहनत करके समाज के साथ अच्छा करेगा। तो उनकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है। यहां पे मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया, बाकी पे रिसर्च किया है। 42 to 46 पे जेआरएफ हो जाएगा, 40 to 42% पे आपका नेट है, और 38 to 40% पे आपका थर्ड कैटेगरी में नेट और पीएचडी दोनों होने के चांसेस हैं। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसके बाद चूंकि आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई हैं, तो आई मेक अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेपर 1 क्लासेस, आई विल टीच यू पेपर 1। सो डू यू रियली थिंक मुझे पेपर 1 पढ़ाना चाहिए? आपको लगता है? बिकॉज देर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स जो पेपर 1 और लिटरेचर में कनेक्टेड है, आपका हायर एजुकेशन और इंग्लिश इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं रिसर्च के, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी लास्ट 10th यूनिट है, वो पेपर 1 में भी है। प्लस मेरे अपने एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ड्रिल्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, बिहेवियरिज्म। तो मेरे पास लगातार बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर आप पेपर 1 पढ़ाइए, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छी है, आप एग्जाम्पल्स अच्छे देते हैं। तो अगर आपको भी लगता है मुझे पेपर 1 पढ़ाना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड वन लास्ट मैसेज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं सिर्फ क्वालिटी में विश्वास रखता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में। जब एक बार नेट नहीं था और आज 10 बार नेट है, यहां से यहां तक मुझे सिर्फ एक ही चीज लेके आई है, नॉलेज। पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, उसमें से चूज करना इंपॉर्टेंट क्या और उसको रिवाइज करना। तो अगर तुम्हें सीरियसली नेट जेआरएफ करना है, सीरियसली नेट जेआरएफ करना लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो तुम चाहे गांव से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, आई विल सजेस्ट यू ऑफलाइन बैच आओ। क्योंकि अगर पानी में कूदना ही है, गीला होना ही है, डूबना ही है, तो समुद्र में आओ, ऑफलाइन बैच में आओ। ऑफलाइन बैच डेट एक्सटेंड हो गई है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 27 जनवरी से। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल।